अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियोस को फुल देखा करें एंड फिर हमारी वीडियोस को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मेरे ट्विन सिबलिंग्स की बर्थडे है एंड इस बार हमने डिसाइड किया कि हम उनकी बर्थडे घर में करते हैं और मामा इनकी फ़ेवरेट डिशेस बना देंगी। और इस व्लॉग में मैं आप लोगों को फुल सेलिब्रेशन दिखाऊंगी कि हमने किस तरह इनकी बर्थडे सेलिब्रेट की। मैं आप लोगों को इनके गिफ्ट्स भी दिखाती हूँ जो कि मैंने पैक करके रखे हैं। सो लेट्स गो। ये है मेरे सिबलिंग्स के गिफ्ट्स जो कि मैंने पैक करके रखे हैं एंड जो सिल्वर वाले हैं वो मेरे भाई के हैं एंड जो पिंक वाले हैं वो मेरी सिस्टर के हैं। आगे डाइनिंग रूम में डेकोरेशन करने एंड हम लोगों ने इतने ज़्यादा बलून्स फुला भी लिए हैं और अभी हम और भी फुला रहे हैं और अब हम जल्दी जल्दी से डेकोरेशन कंप्लीट करते हैं। और अब हम स्पैगेटी बनाने लगे हैं और सबसे पहले हम उसमें ऑयल डालेंगे। 3 to 4 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे। 1 टेबल स्पून गार्लिक डालेंगे। ब्राउन हो गया है और अब हम इसमें 250 ग्राम चिकन डालेंगे। जब तक हमारा चिकन फ्राई होता है तब तक मैं आप लोगों को स्पैगेटी की बता देती हूँ। हमने ये वाली स्पैगेटी यूज़ की है और मामा ने इसको दोपहर में बॉईल कर लिया था क्योंकि आजकल गैस का इशू चलता है। और आप लोग इसका बॉईल करने का मेथड यहाँ से देख सकते हैं, इसके बैग को देखा होगा। अब हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे। Salt. अब हम इसमें स्पैगेटी डालेंगे। और हमारी स्पैगेटी रेडी है और यहाँ पर मेरी मामा चिकन फ्राई कर रही हैं।
और हमारी मम्मा बहुत मज़े का फ्राइड चिकन बनाती हैं। एंड अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे है और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। हम केक कट करने के लिए आ गए हैं एंड मामा ने 2 डिशेस बनाई हैं, स्पैगेटी और फ्राइड चिकन। एंड अब हम प्लेट्स और कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाएंगे एंड हम अपना डिनर करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आमना एंड अब्दुल। तो ये था मेरे बर्थडे का व्लॉग और मुझे बहुत मज़ा आया अपनी बर्थडे पे एंड मुझे मेरे गिफ्ट्स भी बहुत पसंद आए हैं। एंड दिस फॉर द वीडियो, होप लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, smash the like button and also subscribe to our channel. We'll see you next time. Goodbye.